Damodar Savarkar, the fire of the Marathas, the intellect that gave ever so many splendid songs, plays and speeches. He was a revolutionary at heart. His Sanyasta Kaduga portrayed political extremes. His prison terms in exile in Andaman was so long, so miserable, it brings lumps to one throat. From there, his writings continued. They shook the British. Gandhiji rose like a towering giant. His ahimsa and non-violence creeds were successful. He became the idol of the masses. Even in the fun-loving, robust land of Punjab, the frail figure of Gandhi made enormous impact. सब सुन लो हुन राज करेगा गांधी निके वडे सब सुन लो हुन राज करेगा गांधी ओए भले ओए शाबाश ओए भले ओए शाबाश भले 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 आवा हूं भले 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 बारी बरसी खटन गया सी खट गले आंधी खटकली आंधी बारी बरसी खटन गया सी खट गले आंधी बारी बरसी खटन गया सी खट गले आंधी खादी निके वडे सब सुन लो हुन पान गे सारे खादी निके वडे सब सुन लो हुन पान गे सारे खादी आवा हूं The turning of the tide came when in 1928, by the announcement of the Simon Commission for Reforms, the country rejected the so-called reforms. Black flag demonstrations were held. The dramatists rose to the occasion to condemn Simon Commission. Many plays were staged, songs sung, demanding the commission to go back. Vande Mataram! Vande Mataram! Variga variga sahajare Variga sahajare Variga variga sahajare Variga variga sahajare Sahana samara samayamai Sahana samara samayamai Etra naal adimayai idannidum saghakkale Etra naal adimayai idannidum saghakkale Variga variga sahajare Variga variga sahajare Variga variga sahajare Variga variga sahajare Putra pautrarengilam swatantrarai varendayo Putra pautrarengilam swatantrarai varendayo Variga variga sahajare Sahana samara samayamai Variga variga sahajare Sahana samara samayamai Variga variga sahajare Variga variga sahajare Sahana samara samayamai Sahana samara samayamai Etra naal adimayai idannidum saghakkale Etra naal adimayai idannidum saghakkale Variga variga sahajare Variga variga sahajare Variga variga sahajare Variga variga sahajare
പോകാൻ കഴിയില്ല, പോകാൻ കഴിയില്ല. അച്ഛാ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മോൻ നിറവേറ്റും. എന്റെ പൊന്നുമോൻ പോയിട്ട് വാ. Malayalam writer V.T. Bhattatharipad's அடுக்களையிலிருந்து அரங்கத்திற்கு visibly moved statesman E.M.S. Namboodiripad at the thought of women's liberation and other noble social reforms by communal amity on the stage. V.T. Bhattatharipada was a prolific writer of sensitive social issues awakening the public. This was an age of youth who could stand no oppression, youth who longed for freedom of the nation. Bhagat Singh shot dead Saunders, superintendent of police at Lahore, to avenge Lala Lajpat Rai's death. The Hindustan Socialist Republican Association with Chandrasekhar Azad and his comrades were revolutionaries. To continue attacking the British, they went underground. To evade the British from paying tax tactfully, Praful Desai of Gujarat staged his play. સાહેબ આટલા રોકડા ભેગા થયા. ગણ્યા કે નહીં? ગણ્યા સાહેબ. અરે સાહેબ રોકડા થેલીમાં જ રહેવા દો, ક્યાંક ઇન્સ્પેક્ટર આવશે તો આપણને હેરાન કરશે. તારી વાત સાચી છે, તારી વાત સાચી છે. ઇન્સ્પેક્ટર આવે પેલા રોકડાને આમંત્રણ પત્ર પ્રફુલભાઈને આપી દે તો સારું. બોલો સાહેબ. અહીંયા બળકોજો નાટક ભજવાઈ રહ્યું છે. ના ના, અહીંયા તો પ્રફુલ દેસાઈનું નાટક ભજવાઈ રહ્યું છે. પ્રફુલ દેસાઈનું નાટક ભજવાઈ રહ્યું છે. પણ બળકોજો નાટક પણ પ્રફુલ દેસાઈનું લખેલું છે ને કે કેમ છે? તો તમે મને મૂર્ખ બનાવો છો? હા હા. ના 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 ના. અહીંયા આટલા બધા લોકો નાટક જોવા આવ્યા છે, તમે કેટલા નાણાં ભેગા કર્યા? આ બધાને તો આમંત્રણ આપીને નાટક જોવા બોલાવ્યા છે. આ લોકો પાસેથી પૈસા નથી લીધા. હા હા હા, આ લોકો પાસેથી પૈસા નથી લીધા. તો આ થેલીમાં શું છે? આ તો કોંગ્રેસ માટે ફાળો ભેગો કર્યો છે તે છે. તમે આ નાટકની આમંત્રણ પત્રિકાઓ વેચી એ સાચી વાત છે? હા હા હા. ના 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 ના. તો આ શું છે? આમંત્રણ પત્રિકાઓ કેમ અલગ અલગ રંગની છે? અંગ્રેજ સરકારને મનોરંજન વેરો ન ભરવો પડે એટલે. આમાંથી કયા કલરની આમંત્રણ પત્રિકા તમે 100 રૂપિયા વેચી છે? ગુલાબી. પીળી. ગુલાબી ભાઈ. અરે ગુલાબી કે પીળી? ગુલાબી. પીળી સાહેબ, પીળી. અરે તમે મને મૂર્ખ સમજો છો? હા હા હા. ના ના ના. અંદરથી પ્રેક્ષકોમાંથી કોઈને બોલા એમને જ હું પૂછી લઉં છું. ખબરદાર સાહેબ, પ્રેક્ષકોમાં ખલેલ પાડવો તે ગુનો છે. અને તમે જો આ ગુનો કરશો તો 1928 નું આખું વર્ષ તમે પથારીમાં જ પસાર કરશો. તમે અંગ્રેજ સરકારને મનોરંજન વેરો નહીં આપો? Nationalist writers Chandravadan Mehta, Pragji Doso, Gauri Shankar Varati, Trapajkar, Manasvi penned powerful plays. The resurrection of the Hindi stage Rangmanch by Bharatendu Harishchandra of Varanasi. This was a colorful pageant of wizards who shaped their weapon, the stage, against the British. Drama owed its poetic beauty to its heritage from Sanskrit, its inspiration to the devotional songs of Vidyapati and Chandidas, and its flexible form to the folk festivals. It continued as a living institution in large parts of Hindi-speaking belts. The Bharatendu era gave writers who tried to further nationalist outlook and reformist zeal. Kailash Nath Bhatnagar,
Balakrishna Bhatt, Balakrishna Naveen, Jaishankar Prasad, the harbinger of new era in Hindi literature, wrote Chandragupt and Skandgupt. Lakshmi Narayan Mishra, Bhudev Alankar, and Hari Krishna Premi, who wielded a powerful pen in dramatizing historical plays evoking nationalism. शिवाजी, तुम और इस वन में, शिवाजी, मैंने तुम्हें इतना दुर्बल न समझा था। नहीं शिवाजी, नहीं। मां के वियोग के दुख में संपूर्ण राष्ट्र को निराश करोगे, ये मैंने कभी सपनों में भी ना सोचा था। और स्वयं वीरांगना जीजाबाई ने भी ना सोचा था शिवाजी, ना सोचा। आज शिवाजी को स्वराज्य साधना के मध्य में सांस छोड़ते देखकर स्वर्ग में बैठी जीजाबाई क्या सोचती होगी? क्या अब सहा नहीं जाता है गुरुदेव, ये जीवन एक यंत्रणा बन गया। किंतु देश की यंत्रणा इससे भी बड़ी है शिवाजी, देश की यंत्रणा इससे भी बड़ी है। देखो उधर, देखो उस मंदिर में, देखो उस भवानी की मूर्ति को क्या करती है। उस विश्व विजयनी कराला काली के आगे तुमने जो शपथ ली थी शिवाजी, उसे आज तुम तोड़ना चाहते हो? उस शपथ को तुम आज तोड़ना चाहते हो शिवाजी? आज समुद्र सहाद्री की उपत्यकाएं हाहाकार कर रही है। तुमने शिवाजी, तुमने इस प्रदेश में अत्याचारी शक्ति को निकाल अवश्य दिया, किंतु दीन दुखी मजदूर किसान सुशासन की और रोटी कपड़े की मांग कर रहे हैं शिवाजी, मांग कर रहे हैं। गुरुदेव, मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी शिवाजी, छुट्टी। कर्मयोगी को छुट्टी नहीं मिलती शिवाजी, कर्मयोगी को छुट्टी नहीं मिलती। कर्म पर बहुत व्यस्त है। तुम हाथ खींच लोगे शिवाजी, अगर तुम हाथ खींच लोगे तो स्वराज्य विस्तार का कार्य रुक जाएगा, रुक जाएगा। हाँ गुरुदेव, अब जन्मभूमि की अंतः शक्ति जाग उठी है। इस समय ये सारी जाति तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा में है शिवाजी, तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा में है, जान लो। हाँ, तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा में है। बोलो शिवाजी, क्या तुम अपनी भावना से अपने महल के टुकड़े होने देखना चाहते हो? अपनी ही महल के टुकड़े होने देखना चाहते हो? नहीं, नहीं शिवाजी। क्या तुम वीर जननी जीजाबाई के स्वप्न को भंग होते देखना चाहते हो? नहीं गुरुदेव। तो फिर ये निरुत्साह क्यों शिवाजी? उठाओ तलवार, उठाओ शिवाजी। जनता की आज्ञा है, अभी ये कर सुस्त ना हो। जो कुछ तुमने किया वो महान है। तुम महान हो, तुम महातेज हो, महाकाल हो और महाबली के अवतार हो शिवाजी, महाबली का अवतार हो। जो लहर तुमने महाराष्ट्र में फैलाई है उसे सारे भारत में फैला दो। जो ज्योति तुमने सह्याद्री की गिरिमालाओं में ज्योतित की है उसे हिमालय तक पहुंचा दो
शिवाजी। हिमालय तक पहुंचा दो। गुरुदेव, आपने मेरा मोह भंग कर दिया। शिवा, शिवा, जब स्वराज्य साधना का काम युग युग की गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम एक दो दिन में नहीं होता शिवा, एक दो दिन में नहीं होता। ये कांटों और बाधाओं से भरा हुआ है। इस साधक को मां बाप भाई बहन सबका बलिदान कर देना पड़ता है शिवा, सबका बलिदान कर देना पड़ता है, सबका बलिदान। हाँ, जय गुरुदेव। The inspiring stories and legends of valiant heroes remained a theme of plays all over the country. The audience continued getting excited by them. Story of Parasi Raja of the Kerala Hills is one such. അസ്തമേ, പടിഞ്ഞാറ് കത്തിപ്പടർന്ന പ്രകാശം, കിഴക്ക് ഇരുട്ടിൽ ആക്രമണം. കുങ്കൻ, അടിയൻ, ഇതൊരു കാളരാത്രിയുടെ തുടക്കമാണ്. നാടിന്റെ പ്രകാശം ഇവിടെ പൊലിയുകയാണോ? ഇല്ല തിരുമേനി, അവിടുത്തെ തേജസ് ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമായി എന്നും പ്രകാശിക്കും. കുങ്കൻ മുഖസ്ഥിതി പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും സത്യത്തിന്റെ മുഖം മൂടാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ കുങ്കൻ? ടിപ്പുവിന്റെ മരണം, മൈസൂരിന്റെ പതനം, രണ്ടും നമ്മെ ദുർബലനാക്കി. മൈസൂരിൽ നിന്നുള്ള സഹായം നിലച്ചു. എന്താ, എന്തു പറ്റി? അവര് നാട് മുഴുവൻ മുടിക്കുകയാണ്. കൃഷിപ്പണി ചെയ്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടരെ മുഴുവൻ അവർ കൊന്നൊടുക്കി. ചെട്ടിമാരെ നാട് കടത്തി. വിളഞ്ഞു കിടന്ന നെൽപ്പാടങ്ങളെല്ലാം ചുട്ടരിച്ച് വെണ്ണീരാക്കി. കുങ്കൻ, തിരുമേനി, അവർ മുന്നേറ്റമോ ചെറുത്തുനിൽപ്പോ സാധ്യമല്ലാതാക്കുകയാണ്. ഇനി വൈകിക്കൂടാ. ഇത് അന്തിമ സമരത്തിനുള്ള സമയമാണ്. രക്ഷപ്പെടേണ്ടവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. രക്ഷപ്പെടുകയോ? ഇല്ല തിരുമേനി, രക്ഷപ്പെടാൻ കൊതിക്കുന്ന ഭീരുക്കളാരും ഇവിടെ ഇല്ല. എങ്കിൽ പൊരുതി മരിക്കാം. പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഭാരതമാതാവിന്റെ പാദമാണ് ഈ മനോഹര മലയാള ഭൂമി. ഈ പവിത്രമായ ഭൂമി കളങ്കപ്പെടുത്താൻ വെള്ളക്കാർ കാലുവെച്ചാൽ നാം അവരെ തൂക്കിയെറിയും. അങ്ങനെയോ? എന്താ? അവിടെ ജലിക്കുന്നത് യാഗാഗ്നിയാണോ? വരൂ! Gandhiji announced his new weapon, Satyagraha, passive resistance as a protest against the taxes. The common salt that our people make from our own seas belongs to us. Why pay tax for it? The famous Dandi March and the entire nation's faith in the simple saint showed itself in the mammoth gatherings all over India, breaking the salt law. This Tamil song was composed by the national poet Namakkal Kavinyar. Can ordnance and safety bills snuff out the flames of freedom in India? No, said the Chittagong armory raid by Surya Sen and his comrades. They ransacked the armory. A coup was done. Revolutionary activities were carried on by men and women. They were shot down, but their spirit lingered on. This powerful song was composed by Bengali luminary Qazi Nuzrul. লাথিমার ভাঙরে তালা
সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা ফেলু পারি কারা রইল কপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদির রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদির রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদির The British retaliated. Thousands were hanged, butchered and tortured, but the spirit of agitation did not die. As the number of martyrs increased, the determination to win freedom doubled. This is a popular Marathi ode to the martyrs, reflecting the prevailing burning fire of patriotism and the pride in the martyrs. वज्रांचे छातीवरती ध्याजेलून प्रहार गरजा जय जयकार गरजा जय जयकार क्रांतीचा गरजा जय जयकार कशास आई भिजविसी डोळे उजळ तुझे ढाळ रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उषकाल सरणावरती आज आमुची पेटताच पेते उठतील त्या ज्वाळातून भावी क्रांतीचे नेते लोहदंड तव पायामधले खळाखळा तुटणार आई खळाखळा तुटणार गरजा जय जयकार गरजा जय